Assalamu alaikum students. We are going to start the new chapter Reflections on the Reawakening East. As you have already gone through the slides of this chapter in Google Classroom, I am going to explain it further with the text and a diagram. Bertrand Russell, one of the most outstanding writers and thinkers of our time. Bertrand Russell was born in 1872. He inherited an earldom but did not make use of his title. That means he belonged to a good society. He owns an area for himself, but he rejected earldom and he became famous as a writer. He was an eminent mathematician and philosopher. Now this is a very important point because in all of his essay you will see that how he has calculated all the rise and falls and the conditions and the reasons behind the countries taking over the power and losing it. So philosophically and mathematically he calculated every area. Beginning with Principia Mathematica, he has written many books on philosophy and mathematics. His more popular works have been notable for the introduction of scientific attitudes into the discussion of politics and sociology. And you will see the scientific attitude in his observation or regarding that why the people of the world are suffering, which country take over the world, and what was the reason behind it. He has done it very scientifically, and there is a scientific attitude behind this essay as well. Since the Second World War, he has been greatly preoccupied with the nuclear threat to mankind and has been a warm advocate of technical aid to Asian countries. Second World War के बाद जो जितनी डिस्ट्रक्शंस हुई हैं और जिस तरह से पावर में राइज और फॉल हुआ है कंट्रीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए ही जस्ट gave one essay, wrote one essay, analytical essay, और उसमें we can see that he has the warm feelings towards the Asian countries. Warm advocate means कि उनकी एक friendly नज़रिया है Asian countries के लिए. His recent books of general interest include New Hopes for a Changing World. So he is a far-sighted person, was a far-sighted person. एंड उन्होंने देखा कि आगे क्या हो सकता है और किन चीज़ों पे चलकर एशियन कंट्रीज़ अपने लिए बेहतरी कर सकती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ आगे कैसे बढ़ गई एशियन कंट्रीज़ से. This is a heading given by me, the rise and fall of power. This paragraph talks about it. The reawakening of the East is one of those enormous movements that can only be properly understood when viewed in a wide historical perspective. वो ये कहते हैं कि रीअवेकनिंग दोबारा से ईस्टर्न कंट्रीज़ का जाग जाना सिर्फ उसी वक्त हो सकता है कि अगर हम अपने पास्ट में एक वाइड व्यू लेकर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से और इस नज़रिए को देखें कि क्या वजह थी ईस्ट के दब जाने की, वेस्ट की ऊपर आ जाने की. ही वांट्स टू एक्सप्लेन दैट इफ़ यू वांट टू गो टू दिस थिंग कि कौन सी कंट्रीज़ क्यों आगे निकल जाती हैं, वी हैव टू लुक इनटू द पास्ट with a wide historical perspective. Alterations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. Alteration means change. Change of power between eastern side of the world and the West have occurred throughout the last 2000 years and more. यानी 2000 सालों से ये चला आ रहा है. In the earliest history, the East predominated. It's a fact. यानी सबसे पहले अगर आप देखें तो ये ईस्टर्न ममालिक यानी कि मुसलमान दुनिया ही दुनिया पे हुकूमत कर रही थी. इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट. और उनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी थी कि दे वर मोर कंसिडर्ड मोर सिविलाइज्ड और वो वेस्टर्न कंट्रीज से हर तरीके से आगे थे, पावरफुल थे. दैट मीन्स दे वर मोर पावरफुल इन मीन्स ऑफ मिलिट्री, in means of money, monetary values and culture, education. ये सारी चीज़ें मिलके आती हैं, एक कंट्री को पावरफुल बनाती हैं और वो दूसरे कंट्रीज से आगे निकल जाता है. The West, however, acquired the lead in civilization.
with the rise of Greece and in power with the conquest of Alexander. वेस्ट के दोबारा पलट के आने, ये लेट से नॉट पलट के आने, बल्कि ये तो ये होगा कि वेस्ट का ईस्ट को ख़त्म कर देना सिर्फ दो चीज़ों पे था कि जब ग्रीस की सोसाइटी पावर में आई, इनकी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, रोमन्स की इतनी बड़ी थी और इतनी वेल स्टेब्लिश और सिविलाइज थी कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता था. फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर वॉज ऑल्सो क्रिश्चियन और उसने जितनी मुल्क फतह किए और ज़मीन अपने लिए उसने अनेक्स की, यानी कि कितनी सारी की, उसकी वजह से भी जो है वेस्ट आगे निकल गया. फ्रॉम दैट टाइम अंटिल द फॉल ऑफ रोम, दैट इज़ टू से फॉर सम 7 or 8 centuries, द वेस्ट वॉज डोमिनेंट इन पावर एंड इन कल्चर. यानी कि ग्रीस के गिर जाने, रोम की हुकूमत के गिर जाने से तक वेस्ट ने पूरे 7 to 8 centuries अपनी हुकूमत की, जो एक पावर थी सिर्फ मिलिट्री और पैसे में भी नहीं बल्कि कल्चरली भी वो सब में आगे थे. अब ये शिफ्ट ईस्ट की तरफ से वेस्ट में हो गया था पावर का. दे वर कंसिडर्ड द वर्ल्ड पावर. जब रोम की हुकूमत गिरी तो फिर दोबारा से ईस्टर्न कंट्रीज़ ने अपनी हुकूमत दुनिया में जमा ली. द वॉर्स बिटवीन रोमन्स एंड जर्मन्स वॉज द रीज़न बिहाइंड द फॉल ऑफ रोम. Germans succeeded in destroying Roman power, but not in acquiring a similar position for themselves. This is very interesting that Germans fought with Romans, they destroyed them, but they never took that power for themselves. वो खुद सुपर पावर नहीं बन सके. With the West thus enfeebled means weak हो जाना. लीडरशिप एंड पावर एंड कल्चर पास टू द ईस्ट. जब वेस्ट खुद ही कमज़ोर पड़ गया इन्हीं सारी रीजंस की वजह से कि जब एक वॉर होती है तो उसके बाद इकनॉमी डिक्लाइन करती है, आपकी पावर डिक्लाइन करती है, मिलिट्री भी, कल्चरल वाइज भी, और हर तरीके से आप अपनी स्टेटस को खो देते हैं. जब आप दुनिया में ये सब कुछ अपने लिए कर लेते हैं और अपने आप को वीक कर देते हैं तो फिर दूसरे ममालिक आपके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं. दैट्स हाउ दे टेक द पावर फ्रॉम यू. And at that particular time when the Romans were at the bottom, the eastern countries took over. Very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam, which in the great race of the Khilafat ya Caliphate in English had an empire considerably larger than that Rome in its greatest days. See, they're talking about the Turkish Empire, the Khilafat वहाँ की. जब रोमन एम्पायर वीक हुई तो उधर के टर्किश मुसलमानों ने ही आगे बढ़ के बहुत जंगें लड़ी और फतह की, एंड उसकी वजह से ही एक खिलाफत जो हमारे मुसलमानों की थी दुनिया में बहुत अरसे तक कायम रही. एट द सेम टाइम उसी वक्त ये तो एक खित्ता हुआ, आपके एक कॉन्टिनेंट या एक एरिया हुआ दुनिया का कि जिसके ऊपर खिलाफत थी. पूरी दुनिया पे तो वो नहीं कब्ज़ा करके बैठे थे. तो इसी तरह से एट द सेम टाइम व्हेन द खिलाफत वाज रूलिंग, द मुस्लिम्स वर रूलिंग. चाइनीज़ एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली ऑफ द टैंग डायनेस्टी वाज इक्वली ग्लोरियस एंड ऑलमोस्ट इक्वली एक्सटेंसिव. चाइना में चाइनीज़ एम्पायर रूल कर रही थी और उनका एम्पायर का होल्ड था टैंग डायनेस्टी के ज़रिए, यानी कि ये जो कबीला था उसके सरदार और उसकी हुकूमत थी और काफ़ी अरसे वो भी इन्होंने करी हुकूमत वहाँ पे, इक्वली एज द कैलिफेट वाज इन द टर्की. दिस इज़ हाउ द टू ईस्टर्न नेशंस एक्चुअली टूक ओवर एंड द पावर फ्रॉम द वेस्ट. द सुप्रीमेसी, okay, we'll continue afterwards with that line. Rise and fall of world powers. This is a small diagram which I sketch. Usually I do it on the board, but I have just done it on the page for you. Rise and fall of the world powers. If you look into it, I have described it in very clear manner that in the earliest history, East was the superpower of the world. Then by the time it shifted to West, and there were two reasons behind it, due to the rise of Greece in power and conquest of Alexander.
Then what happened that West lost this power and the East took over again, and their reason to fall back was due to the fall of Greece. War between Romans and Germans actually made the West weak and the East took over. Now the East was ruled by Eastern countries or let's say the Eastern dynasties were the Tang dynasty and the Caliphate in the Turkish area, in the Turkey. So here we have this a small diagram just to clear the concept which we have done in one, that half of the paragraph of the first page of this second chapter. So I think this is much is clear that what were the reasons behind the fall of the empires, why the other empire take over. Of course, when one empire goes weak, the other takes over. So this is how it is going to go further, and Bertrand Russell is going to discuss in detail the reasons behind the Western society taking over back again the power from the East. You will see that after East, the West took over and their dominance is still present today. But Bertrand Russell hopes that East can survive, and he will give you good reasons for it.